ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। So last time we started with Ashtavakra Gita, and it starts with Janaka's question. Janaka uvacha katham jnanam avapnoti katham muktihi bhavishyati वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो. That how one acquires knowledge, how one can get liberated, how one can be totally detached. Oh my Lord, please explain to me. So that is the first question which is asked by Janaka to Ashtavakra. And Ashtavakra instantaneously gives answer, and he says, Mukti michhati chetat विषयान विषवत्यज क्षमार्जव दयातोषम satyam piyushavat bhaja. So the instantaneous solution which Ashtavakra gives is that if you want mukti, the first thing is विषयावत त्यज. जो विषय हैं, जो मन को बाह्यमुखी चेतना मन को बाहर खींचती है, वो जो विषय है इंद्रियों के, उनको विषय के समान उसका त्याग करो, विषय की परीक्षा मत ले लो. So the first thing is we have to detach ourselves from all the sense organs, the sensuality, and develop certain virtues. Okay, kshama, arzava, daya, santosh, satya. So these are the preparatory virtues which one has to develop in order to be able to get rid of all that sensuality, vishayan vishavat tyaja. And so now we come to the third shloka. So up to here we have done last time, and today he gives the instantaneous sadhana is mentioned in the third shloka. न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्यौ न वा भवान एषाम साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये. न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न द्यौ न वा भवान. So the first thing is which Ashtavakra is telling to Janaka is understand that you are not the five elements, पंच महाभूत. तुम पंच महाभूतों का संघात नहीं हो. पृथ्वी आप तेज वायु आकाश. So earth, water, fire, air, and space.
So these are the five elements of which the body is made. And we first think that I am the body. So you are not the body. That is the first thing. Hmm? What are you really? Esham sakshinam atmanam. इनको देखने वाला साक्षी चैतन्य तुम हो. So understand that you are only a witness. And then chit रूपम विद्धि मुक्तये. And then मैं चैतन्य हूँ ऐसा जानकर मुक्त हो जाओ. So what Ashtavakra is trying to tell in this third sloka, where he tells the sadhana itself, is that first inquire, you say that I want to be liberated, मुझे मुक्ति चाहिए. तो पहले मैं कौन हूं इसका तो ख्याल करो. When you are saying that I want liberation, who are you? Try to understand who are you, who wants to be liberated. And when we start meditating on who am I, मैं कौन हूं, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन जब मनुष्य करने लगता है, the first and the most obvious thing which comes to us is I am the body. हम मैं कौन हूं ऐसा चिंतन करने से मुझे ऐसा लगता है मैं तो शरीर हूँ, शरीर के द्वारा ही मैं सारी क्रिया कर रहा हूँ. तो आई एम व्हाट आई एम द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स. मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं इंद्रिया हूँ. सो दिस इज, यही तो मेरी पहचान है. तो पंच महाभूत ना, ये शरीर कहाँ से बना हुआ है? पंच महाभूतों से बना हुआ है. द बॉडी is made up of Prithvi, Apa, Teja, Vayu, Akash. So this is the old theory, Sankhyan theory, that the hardware which I am using is made up of the five elements. पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर ही मैं हूँ. ये तो मेरा पक्का भाव है. दैट इज माय फर्स्ट, ये तो मेरी पहली पहचान है कि मैं शरीर हूँ जो पंच महाभूता से बना हुआ है. और ये शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, दिस इज माय हार्डवेयर, नो डाउट. द फिजिकल स्ट्रक्चर, उसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, स्मृति, व्हाट आई कॉल इज अंतःकरण, द इनर इंस्ट्रूमेंट, द सटल बॉडी. तो जैसा मैं स्थूल शरीर हूं, वैसा मैं सूक्ष्म शरीर भी हूं. और ये सूक्ष्म शरीर भी पंच महाभूतों से ही बना हुआ है. द सटल एस्पेक्ट्स ऑफ पंच महाभूतास विच आर कॉल्ड एज तन्मात्रास. तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, स्मृति, ये सब तन्मात्राओं से बना हुआ है. पंच महाभूतों के सूक्ष्म स्वरूप से मेरा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है. और मैं कौन हूं? मैं स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं. यही तो मेरी पहचान है. So this is what I think about myself when I start looking within, and when I try to find out who am I. The first thing which I get, I am the body, the physical body, and also I am the mind, I am the senses, the subtle body. That is what I am. But if we start thinking very deeply about it, we find that what I am calling as I am this body is undergoing change every moment. जिसको मैं समझ रहा हूँ शरीर, ये तो शरीर बदल रहा है, हर सेकंड बदल रहा है. बचपन में ये शरीर था, लेकिन वो इतना अलग था. द बॉडी विच वॉज देयर व्हेन आई वाज ए चाइल्ड is so different. By chance, if you get your photograph when you were something like 6 months old, newly born baby, you will not recognize yourself. You will say, "Oh, this was me. ये मैं था, 6 महीने का बच्चा." And then if you get another photograph when you're going to school, again you will not recognize yourself. क्या ऐसा दिखता था मैं? 4 साल का, 5 साल का स्कूल में जाने वाला बच्चा, कितना बदल गया है ये शरीर. The body has
undergone so much of change. Body is a changing reality, ever changing reality. Every second it is changing. And so is about the mind and the senses. My senses are changing, my mind is changing. अभी एक विचार आया था, फिर दूसरा विचार आया, फिर तीसरा विचार आया. Sometimes I am depressed, sometimes I am excited, I am elated, sometimes I am highly egoistic, sometimes I am full of worries and tensions. Even at the subtle level, सूक्ष्म शरीर में भी जो मैं हूं ऐसा मुझे लगता है वो बदल रहा है. कभी बहुत आनंदी है, कभी बहुत दुखी है, कभी बहुत चिंतामय है. So what I am thinking as I am, as the physical body, or I am as the subtle body, जो मैं समझ रहा हूं मैं हूं, यानी स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर, ये तो बदल रहा है, बहुत ही बदल रहा है. तो अष्टावक्र कहते हैं कि असल में तुम ये हो ही नहीं. You are not पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. You are not this pancha mahabhutas. You are not this changing reality which is the physical body. You are not that changing reality which is the subtle body. You are actually the one who is perceiving this change. एशाम साक्षिणम आत्मानम. तुम तो इसके साक्षी हो. ये जो बदल रहा है स्थूल शरीर, ये जो बदल रहा है सूक्ष्म शरीर, उसको देखने वाला साक्षी तुम हो. एशाम साक्षिणम आत्मानम. और ये तुम जानो कि तुम तो केवल साक्षी हो. यू आर ओनली विटनेस. इट इज यू हु इज सीइंग, हु न्यू दैट आई वाज द चाइल्ड, a small child, and who has seen that I was in college and I was a young man. There is a witness inside who is seeing all this change, who is seeing that I was worried yesterday and I was very excited day before yesterday, and I am somewhat all right now as I am listening to Ashtavakra Gita. It seems that oh, I am quite quiet. Who is who is this? Who is observing this subtle body? He is the Sakshi Atman. So what Ashtavakra is saying, first understand that you are not that changing reality of the physical body. You are not the changing reality of the subtle body. तुम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नहीं हो, लेकिन उसको देखने वाला साक्षी तुम हो. एशाम साक्षिणम आत्मानम Chidrupam Vidhi Muktaye. I am Chidrupam. I am that pure consciousness who is watching all these things. Okay. And if you understand that, at once you will be released. Hmm. Only slight change of attitude is necessary. This is the beauty of Ashtavakra, that Ashtavakra giving such a suggestion that if you adopt it, at once there will be total change in the lifestyle itself. अष्टावक्र गीता इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो अष्टावक्र कह रहे हैं वो अगर आप समझेंगे और उपयोग में लाएंगे, जीवन पूरी तरह से बदल देगा. यही गारंटी है अष्टावक्र की. What अष्टावक्र has told is this: आप साक्षी हो जाओ. Why you are getting attached to what body is doing? Why you are getting attached to what mind is doing? The moment you lose that sakshi attitude, you start suffering. The moment you become a witness, you start enjoying. You are ever happy, whatever may happen to the body, whatever may happen at the mental level. You will be blissful if you become sakshi. You know, Osho has given a very beautiful example
of what is that witnessing attitude. He says that I was walking on a street in a village. It was evening, and all of a sudden there was a storm, and there was heavy rain, and there was lightning, there was thundering, and it was the village road, and instantaneously the road became so muddy. पूरा कीचड़ फैल गया, वो जो पगडंडी थी उसके ऊपर, और कपड़े भीग गए, बहुत सारा बारिश आ रहा था, हवा चल रही थी, बिजलियां चमक रही थी, और वृक्ष तो ऐसे हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक वृक्ष तो मेरे ऊपर गिर जाएगा. So all sorts of problems, and then somehow or the other I was just worried, what is this? I am not able to reach home, and it's so much troublesome. ये इतना कीचड़ है, भीग गए हैं, पूरे कपड़े भीग गए हैं, and it was really torture, a great torture. And when I reached home, and when I wash my feet, when I clean myself, हाँ, कपड़े से शरीर को सुखा लिया, and then I took a hot cup of coffee and sat in the veranda and started looking. Oh, it was a wonderful sight. The rain, the storm, the lightning, which was torturing me all the time through all the way, now I was enjoying it. फिर मैं देखने लगा, अरे कैसी बिजली चमक रही है, कैसा मजा आ रहा है बारिश को देखने में. Now what was the difference? When I was involved in the thing, it was so torturous. Now I was only witnessing the thing. I was looking at the lightning. I was looking at the storm. I was looking at the trees which were dancing with the wind. Everything was so joyous. This is the difference between the man who is involved and the man who is witness. This is what actually Ashtavakra is telling. If you are involved in what mind is saying, what senses are saying, it gives you torture. हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, इनमें अगर हम आसक्त हो जाते हैं, इनका अगर हम सुनने लगते हैं, शरीर का अगर हम सुनने लगते हैं, शरीर के साथ आसक्त हो जाते हैं, life becomes full of misery, full of worries, full of tension. But if we start witnessing, if we become only onlooker without getting involved in anything, life becomes joyous. So that is the first thing which Ashtavakra is telling. जो साधना बताइए, साक्षी चैतन्य हो जाओ. And that is what he continues in the fourth stanza. यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनेव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि. यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनेव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि. You detach yourself from the body. देहम पृथक कृत्य, शरीर से अगर अलग हो जाओगे, चिति विश्राम्य तिष्ठसि, if you rest in pure consciousness, chiti, pure consciousness. So if you detach from the physical consciousness and rest in pure consciousness, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनेव सुखी शांतो, at this very moment, instantaneously, Sukhi Shanto Bandha Mukto Bhavishyasi. You will become happy, you will become quiet, you will be free from all the bondages. At this very moment, you will be free from bondages. Because you are attached to the body,
नॉट ओनली द फिजिकल बॉडी बट द मेंटल बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि तुम संलग्न हो, क्योंकि तुम आसक्त हो, पूरी समस्याएं तुम्हारे सामने है. Even for a moment, if you free yourself from the physical consciousness, from the mental consciousness, and rest in pure consciousness, chiti vishramya tishtati, rest in pure consciousness, शुद्ध चैतन्य में आश्रम आराम करो. और मैं स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, इसके साथ जो आसक्ति है उसको छोड़ दो. ऐसा अगर आप किए तो अभी अभी इसी समय, अधुनेव, अधुनेव इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे, इंस्टेंटेनियसली, एट दिस वेरी मोमेंट, यू विल बी फ्री, यू विल बी क्वाइट, सुखी शांतो बंध मुक्तो. You will find that you have no bondages, you are totally free, you are totally happy instantaneously. सो हमारी जो समस्या है वो देहाभिमान है. We are so much attached, we can't think of ourselves without body. देहाभिमान ये हमारे अंदर इतना पूरा भरा हुआ है, एक क्षण भर भी हम देहाभिमान भूल नहीं सकते. मैं शरीर हूं ये नहीं भूल सकते हैं. We are so much attached to the body, not only physical body but even the mental body. स्थूल शरीर और सूक्ष्म इतने जुड़े हुए हैं, we cannot think even that I am free from my body. I means I am the body. How can I think of myself without body? How can I think of myself without mind, without senses, without intellect? मैं शरीर हूं, इस भाव में हम पूरी तरह से डूबे हुए हैं. और यही हमारी समस्या है. दिस इज द प्रॉब्लम. और यही हमारा बंधन है. This is our attachment, and this is something which is so what Ashtavakra is telling is, even for a moment, if you detach yourself from physical consciousness and mental consciousness, instantaneously you get liberated, instantaneously. And then we say that Ashtavakra is telling something impossible. Hmm? ये तो बताना ठीक है कि तुम शरीर से खुद को अलग मानो, और तुम मन से अलग मानो, और चित्त में विश्राम करो. ये क्या पॉसिबल है क्या? हाउ कैन, यू आर टेलिंग समथिंग इम्पॉसिबल माय लॉर्ड अष्टावक्र, यू आर टेलिंग समथिंग विच इज इम्पॉसिबल. हाउ कैन आई थिंक ऑफ अवर सेल्फ विदाउट बॉडी एंड माइंड? Ashtavakra says that it is possible. In fact, you are doing it every day. Hmm? Ashtavakra is saying that you are doing it every way, every day. Do you think that you have body and you have senses and your mind in deep sleep? Are you not having the experience of deep sleep every day? क्या आप सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाते हैं हर रोज? और क्या सुषुप्ति अवस्था में मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये बात, ये भाव रहता है? You are actually detaching yourself from your body, from your mind every day. It is not impossible as it looks. On the face of it, it looks very impossible. शरीर से अलग हो जाओ, मन से अलग हो जाओ. ऐसा कैसा अलग हो सकते हैं? अष्टावक्र कहते हैं अलग होते हो, तुम रोज होते हो सुषुप्ति अवस्था में. And that is why deep sleep is so blissful. Everything is forgotten in deep sleep. Even if you are a patient, if you are suffering, if you are a cancer patient, you can imagine the misery of a cancer patient who is seeing his death in front of him. जो कैंसर का पेशेंट होता है उसको तो मृत्यु सामने दिखाई देता है, हर क्षण हर पल, कभी भी अभी मैं मर जाऊंगा.
कितना दुख होता है। एक तो मैं मर जाऊंगा इसका दुख, एक तो शरीर की वेदना है उसका दुख, मैं मर जाऊंगा तो मेरे फैमिली का क्या होगा इसका टेंशन, सो मच ऑफ वरी, व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली, व्हाट विल हैपन टू माय सन, व्हाट विल हैपन टू माय वाइफ, anxiety, worry, tension, and that pain. Cancer patient is suffering every moment. But suppose if he sleeps in deep sleep, there is no cancer, there is no wife, there is no child, there is no death, full of bliss. A man who is asleep is full of bliss. Now remember, we are not talking about the dream state. According to Vedanta, wakeful state and dream state, they are similar to each other. स्वप्नावस्था की बात नहीं कर रहे हैं हम। स्वप्नावस्था और जागृतावस्था में ज्यादा अंतर नहीं है, एक दूसरे के जैसे ही है। लेकिन जो सुषुप्ति अवस्था है, जिसमें वी डोंट हैव एनी अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा, दैट इज हाउ पतंजलि हैज डिफाइंड निद्रा, जिसमें कोई प्रत्यय ही नहीं आता है, अभाव प्रत्यय। देयर इज नो, देयर इज ए स्टेट ऑफ नो एक्सपीरियंस, अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्ति निद्रा, नो एक्सपीरियंस एट ऑल, नो एक्सपीरियंस ऑफ बॉडी, नो एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। That is why sleep is so blissful. That is why if there is no sleep, we rush to the doctors. Those who suffer from insomnia, it is so horrible. You know, any other thing is all right, but if you are not getting sleep, it is so horrible. Everybody else is sleeping, everybody else is snoring, and you don't get sleep. You rush to the doctor, you take sleeping tablets. Why sleep is so important? Because that is the state in which you are able to detach from body mind complex. But unfortunately, you don't have awareness in sleep, क्योंकि निद्रा तमोगुण से भरी हुई होती है, हमको पता नहीं होता है कि मैं कौन हूं। So the actual, they say in yoga, sleep and samadhi, they are very similar to each other. But in sleep, there is no awareness, and therefore there is no experience. In samadhi, there is full awareness, total awareness. And that is why in yogis, in samadhi also, they do not feel the body, they do not feel the mind. They are totally detached from body mind complex. They are full of bliss. The same thing we also experience in sleep, but because there is no awareness, we don't know about it. Yadi deham pruthakrutya chiti vishramya tishtasi. Now there is another very important question which can also come. यदि देहम पृथक कृत्य, देह से अलग हो जाओ, देह से दूर हो जाओ, इज अष्टावक्र टेलिंग अस टू डाई और व्हाट? देहम पृथक कृत्य यानी अगर मैं शरीर से अलग हो जाऊंगा तो क्या मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी? ना एक बात तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। इस प्रकार अगर देह से अलग हो जाते हो, यानी मृत्यु अगर हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने से मुक्ति नहीं हो जाती। with death you are never liberated. मृत्यु तो स्थूल शरीर की हो जाती है। What we call as death is the death of the physical body, the gross body. The subtle body doesn't die. मेरा स्थूल शरीर मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, it travels. We know that, you know, गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात. That is what Bhagavad Gita says. Just as fragrance leaves the flower and spreads, like that the subtle body leaves the gross body and goes away. Manasya
Ashtani indriyani prakritisthani karshati. Then that subtle body, that Jivatma which has left the gross body, will again find another body, another sense organs, another hardware. गृहीत वैतानि संगति प्रकृति से फिर वो मन, शरीर, इंद्रियां खींच लेगा और नया शरीर बनाएगा। तो मृत्यु से मुक्ति नहीं होगी यदि देहम पृथक्कृत्य, यानी इट इज नॉट you die and you go out of the body with death you are not liberated. Okay, so it is not really the death of the body. Body is like the instrument which God has given us for this journey called life. You know, in Ashtavakra, when we learnt Kathopanishad, a very beautiful simile was given for this body. You know, Atmanam Rathinam Vidhi Shariram Rathamevatu Buddhim tu Sarathim Vidhim Manah Pragrahamevacha Indriyani Hayan Ahu Vishayanteshu Gocharan. Very beautifully told. बहुत ही प्यारा कठोपनिषद का ये श्लोक है जो कहता है कि आत्मा तो रथिन है, ही इज द चैरिएटर, ही इज द ओनर ऑफ द चैरियट. व्हाट इज दिस बॉडी? बॉडी इज लाइक ए चैरियट. ये हमारा जो शरीर है वो रथ जैसा है. रथ किसके लिए? रथ ये यात्रा के लिए उपयुक्त है, जर्नी के लिए उपयुक्त है. सो बॉडी is given to you for journey called life. Life is a journey. ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा के लिए ये रथ दिया हुआ है. और ये रथ को जो घोड़े हैं वो इंद्रियों के घोड़े लगे हुए. इंद्रिया यानी हयान आउ, हय यानी घोड़े. सो ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स आर लाइक द हॉर्सेस. और घोड़ों को जो लगाम होता है वो कौन सा है? मन प्रग्रह में वच. हमारा मन ये लगाम है ये घोड़ों का. और ये लगाम किसके हाथ में है? सारथी को है. बुद्धिम तो सारथिम विद्धि. हमारी बुद्धि सारथी है. व्हाट इज बुद्धि? One which is able to discriminate between right and wrong, between papa and punya, between shreyas and preyas, between atman and anatman is buddhi. निश्चयात्मिका बुद्धि. तो ये बुद्धि के हाथ में मन का लगाम इंद्रियों पर है. और ये रथ कहाँ जा रहा है? विषयांतेषु गोचरान. विषयों के रास्ते पर ये रथ दौड़ रहा है. अगर मन का लगाम ढीला पड़ गया, मन का लगाम ढीला पड़ गया यानी क्या? जो इंद्रियों की आसक्ति है, जो इंद्रियों की डिमांड्स है, उस पर ही हम दौड़ने लगे. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू अस. Whatever senses are saying, we run after the sensual urges, we run after the physical urges. घोड़े अगर बेलगाम हो जाएंगे तो रथ गड्ढे में गिर जाना तय है. So if we run after the sensual urges, the physical urges, life is gone. अगर बुद्धि का सारथ्य अच्छा है, then the journey will become यात्रा. तो ये तीन शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है. बहुत लोगों की जो जिंदगी होती है ना, इट इज लाइक वॉन्डरिंग. वो तो भटकना होता है, भटक जाते हैं, मालूम ही नहीं कहाँ जा रहे हैं. देयर इज नो डायरेक्शनलेस लाइफ. मेनी ऑफ द पीपल दे लीड डायरेक्शनलेस लाइफ. अगर लगाम ही नहीं है घोड़ों को तो जहां घोड़े ले जाएंगे वहां रथ चला जाएगा. भटकना है ये. उससे ज्यादा अच्छी जिंदगी है जिसको हम प्रवास कहते हैं. इट इज समथिंग लाइक ए जर्नी. प्रवास में निश्चितता होती है. मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है. मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली के ट्रेन में बैठूंगा. आई नो वेयर आई हैव टू गो and therefore I will take that direction in which
So the people who decide where they have to go, that is called a journey. जर्नी ये बुद्धि से होती है, लेकिन वो जर्नी में कष्ट होता है, वो जर्नी में चिंताएं होती है, कब पहुंचेंगे पता नहीं. सो देयर विल बी टेंशंस, देयर विल बी स्ट्रेसेस. प्रवास में हमको चिंताएं होती है, कष्ट होते हैं. लेकिन अगर हम यात्रा कर रहे, यात्रा हृदय से होती है. जो यात्रा पर जाते हैं ना, वी आर डूइंग अमरनाथ यात्रा, वी आर गोइंग टू ए पिलग्रिमेज. तो यात्रा में कठिनाई भी आ गई तो हम सोचते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है. आई एम नॉट वरीड, आई एम नॉट टेंस. भगवान तो है. यात्रा गोज विद द फेथ इन योर हार्ट. तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमको जीवन में भटकना है, या प्रवास करना है, या यात्रा करना है. सो आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च. इंद्रियाणि हयान आहु, विषयान तेषु गोचरान. So you have to understand what is the meaning of life. And if we detach, now what Ashtavakra is telling is, you get out of this ratha, or you become only witness to your journey. Then your journey will become yatra. ये जो जीवन नाम की यात्रा है, उसको देखने वाले तुम हो जाओ, then it will be most wonderful thing. And that is what he says in the next sloka. He is actually emphasizing on this journey aspect. Natvam vipradiko varno nashrami naksha gochara asangosi nirakaro vishwasakshi sukhi bhava. When you are thinking, who am I? There are so many misconceptions which you have imposed upon yourself. मैं कौन हूं? पहले तो मैं शरीर हूं ऐसे सोचते हो, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, और उसके बाद मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं. नत्वम विप्रादिको वर्णो. You are not the different castes which you think about yourself. You are not Brahman or Kshatriya or Vaishya or Shudra. विप्रादि न आश्रमी. तुम ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ऐसा आश्रमी मैं हूं. अभी मैं कौन से स्थिति में हूं? अभी मैं वानप्रस्थी हो चुका हूं. अभी मैं गृहस्थाश्रमी हूं. अभी मैं ब्रह्मचर्याश्रमी में हूं. So you confine yourself to ashram, you confine yourself to varna. Na akshagocharaha. Whatever you see, I am tall, I am small, I am rich, I am very poor, I am very healthy. These are the things which we see in ourselves. मेरे बारे में जो मैं सोचता हूं, अक्षि गोचरा, जो इंद्रियों से मालूम पड़ने वाला मैं हूं, वो मैं हूं. I am strong, I am weak. I am very beautiful, I am very ugly looking. I am very tall, I am very short. This is what I see through my sense organs. अक्ष गोचराः. जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है वो मैं नहीं हूं. नहीं तो मैं सोचता हूं कि अरे मैं तो ब्राह्मण हूं. मैं ब्राह्मण हूं उसका मतलब क्या है? मैं क्षत्रिय हूं, मेरा मतलब क्या है इसे? यानी मैं ब्राह्मण इसलिए हूं क्योंकि मेरा बाप ब्राह्मण था, मेरी माँ ब्राह्मण थी, इसलिए मैं ब्राह्मण हूं. मैं क्षत्रिय क्यों हूं? मेरा बाप क्षत्रिय, मेरी माँ क्षत्रिय, इसलिए मैं क्षत्रिय हूं. मेरा बाप शूद्र, इसलिए मैं खुद को शूद्र समझता हूं. जहां जिस फैमिली में मैंने जन्म लिया, वो फैमिली का मैं हूं ऐसा मैं समझता हूं.
So not only about this Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, but even I think that I am Indian, I am American, I am Gujarati, I am Maharashtrian, I am Tamil Nadu. Because you are born in Tamil Nadu, you are thinking that you are a Tamilian. I am born Maharashtrian, therefore, so these are the stamps we put on ourselves. मैं कौन हूं, इसमें हम कितने प्रकार के आवरण डालते हैं. मैं ब्राह्मण हूं, एक आवरण आ गया. कहां से ब्राह्मण हूं? तुम तो आदमी हो भाई. कहां से तुम क्षत्रिय हो? क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए इसलिए तुम क्षत्रिय हो. लेकिन हो तो डरपोक, चूहे से भी डरते हो. और ये कहते हो मैं क्षत्रिय हूं. तुम कहते हो मैं ब्राह्मण हूं. और तुमको कुछ भी अध्यात्म के बारे में मालूम नहीं है, कुछ भी तुम इतने स्वार्थी हो और फिर भी कुछ को ब्राह्मण कहते हो. तुमको जरा सा भी सेवा भाव नहीं हो. शूद्र कौन होता है? जो सेवा भावी होता है वो. इन भगवद गीता वी हैव लर्नड इट अर्लियर, सो वी शैल नॉट डिस्कस टू मच अबाउट इट. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. ये चातुर्वर्ण्य जो संस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जन्म के अनुसार होता ही नहीं है. गुण कर्म विभागशः. तुम्हारे कर्म और तुम्हारे गुण ये बताते हैं कि तुम ब्राह्मण हो क्या, क्षत्रिय हो क्या, वैश्य हो या शूद्र हो. तुमने खुद ने ये डिसाइड करना है, जन्म के अनुसार नहीं. गुण कर्म विभागशः. तुम्हारे गुण कैसे है, तुम्हारे कर्म कैसे है. क्या तुम योद्धा हो? क्या तुम जाके लड़ना चाहते हो? तो हो सकता है तुम क्षत्रिय हो. If you really have inclination towards spiritual progress, if you really from inside you feel that you should renounce the world, maybe you become sannyasi, maybe you can become Brahman. Your tendency is such that you are interested in commerce, maybe you will become Vaishya. So it is for you. Guna karma vibhagasha चातुर्वर्ण्यम. तो ये जो चार, तो खुद को ये कुल में मैंने जन्म लिया है इसलिए मैं ब्राह्मण हूं. मैं धनवान कुटुंब से हूं इसलिए मैं धनी हूं. आई एम बॉर्न इन वेरी पुअर फैमिली, देयरफॉर आई एम ए वेरी पुअर फेलो. डोंट थिंक योर सेल्फ एज बिलोंगिंग टू योर फैमिली. neither think of yourself belonging to some ashrama. What are you? Asangoshi nirakaro vishwasakshi sukhi bhava. What you are is vishwasakshi sukhi bhava. You are only a witness to whatever is happening in the whole world. You are not Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. You are not ब्रह्मचारी और गृहस्था और वानप्रस्थी और सन्यासी. You are not the senses and body and your physical form or what you think about yourself through the senses, nakshi gochara. You are detached, asangosi, nirakaro. You are only pure consciousness. You don't have any name and form. You are nameless, you are formless. Vishwasakshi, you are a witness to the whole world. If we have this attitude of a witness, the life will become very beautiful. Life. So actually in all these slokas, the main sadhana which Ashtavakra is giving is sadhana of sakshi bhava. तुम साक्षी बन जाओ. And what do you mean by it? And Vishwa Sakshi Sukhi Bhava. Instantaneously, the happiness will be there. Now, what is that Sakshi Bhava sadhana is telling about? ये कैसा है, क्या बता रहा है ये साक्षी भाव? ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, वैश्य नहीं हूं, ऐसा सोच के केवल साक्षी बन जाओ, ऐसा कैसा हो सकता है?
He says, if it is possible, if you start watching yourself, if you start witnessing, whole life will change within no time. We all should start really the Sakshi Bhavat sadhana instantaneously. इसका मतलब क्या करना क्या है असल में, क्या करना है हमको? You watch your mind. Whenever you become angry, become aware that you are going angry, you are becoming angry, and start watching your anger. Say to yourself, oh, look at this fellow getting angry. Now, if this happens, there will be sea of difference between your life. A sadhana which Ashtavakra has telling is so subtle and extremely effective. ऐसा लगता है ये तो कॉक एंड बुल स्टोरी है, ये कवि कल्पना है, ऐसा लगता है. साक्षी भाव कवि कल्पना नहीं है. If you really start, whenever you are nervous, if you are nervous, detach yourself and look at yourself and so, oh, this fellow is nervous, as if you are looking at somebody else. साक्षी भाव का मतलब यह है कि खुद की ओर तटस्थता से खुद की ओर देखना, खुद का आचरण देखना, खुद के मन के भाव को देखना. So look at yourself and say, oh, look at this man, he is so nervous right now. Why is, and just as you look at your friend who is nervous, suppose if people have gone for interview and one fellow has become nervous, huh, and he's perspiring, he's moving here and there, and if you are a witness and if you see, अरे कैसा डर गया है यार ये आदमी, जैसा कि बाघ की गुफा में अभी जाने वाला है, तो कैसा डर लगेगा, ऐसा डरा हुआ है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है, आपको हंसी आ जाएगी उसको देखकर. हम्म, कि इतना डरने का क्या है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू में फेल हो जाएगा और क्या होगा. ऐसा थोड़ा है कि बाघ के गुफा में जा रहा है और वो बाघ उसकी जिंदगी लेने वाला है, इतनी डरने की क्या बात. दिस यू कैन सी इफ यू आर वॉचिंग somebody else who is nervous. Now what Ashtavakra is saying, when you are nervous, you watch yourself exactly in the same way. Say to yourself, this fellow is becoming so nervous. Suppose if something has happened in the house, really tragic, you are worried, anxiety. You say, where is Ashtavakra Gita now? Now, suppose if the thought comes inside, look at this fellow who is full of anxiety, full of worry, full of tension. Now, first remember, this thought itself will bring the anxiety, worry, tension to half. Awareness is such a thing, the moment you become aware of your emotions, of your physical status, that awareness itself will reduce the anxiety. प्रयोग करके देखने लायक चीज है कि ये बताओ इधर से कि देखो कितनी चिंता हो रही है, किसको ये चिंता हो रही है, क्यों इतनी चिंता हो रही है, कौन सी ये सुनामी मेरे अंदर पैदा हो गई है. एंड इफ यू कैन रियली वॉच इट with detached awareness, it is not so easy, of course, not so easy, but beginning can be made. Even if we make a beginning of it, life will change. Life will change tremendously. Then you will see the tsunami on the shore. You are on the shore and watching the tsunami, a big wave coming, and you are enjoying that. A big wave is coming. If you are with the wave, you are crying because you see death in it. अगर आप लहरों में फंसे हुए हो तो आपको डर लगेगा कि ये तो सुनामी मुझे मारने वाली है, अभी तो मर गया, जोर से चिल्लाओगे, मर गया मर गया मर गया करके चिल्लाओगे. इफ यू आर इन ए सेफ प्लेस एंड इफ यू आर वाचिंग द वेव, यू आर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देखो क्या हो रहा है. माय गुडनेस, यू आर ओनली विटनेसिंग इट. नाउ व्हाट ही इज टेलिंग
अष्टावक्र इज टेलिंग इज असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव. तुम असंगो हो, निराकार हो, विश्व साक्षी सुखी भवो. जो कुछ विश्व में हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, ओनली बिकम ए विटनेस. प्रेक्षक हो जाओ. जो कुछ ये दुनियादारी चल रही है, ये दुनिया का जो रंगमंच है, उसके ऊपर जो मूवी चल रही है, उसको देखने वाले दर्शक मात्र हो जाओ. इफ वी आर वॉचिंग द मूवी, देन वी आर नॉट कंसर्न. We enjoy the tragedy, we enjoy the comedy, we enjoy the dangers. जब हम प्रेक्षक हो जाते हैं और प्रेक्षक होके जब चित्रपट देख रहे हैं, तो उसमें जो कुछ हो रहा है, उसमें जो घटना है वो दुर्घटना भी हो, तो दुर्घटना को भी हम ऐसा देखते हैं कि ये मुझे नहीं हो रहा है, बिकॉज अंदर में ये पता चलता है कि ये तो मुझे नहीं हो रहा है. वी एंजॉय even the most tragedy, even the great calamity which is on the screen, because I know that this is not me. I am only a witness. मैं प्रेक्षक हो जाता हूँ. जब भी आप प्रेक्षक हो जाते हैं, तभी तभी केवल आनंद हो जाता है. There is no tension. He says, is it possible for you to become a witness to your own life, to whatever is happening around you, around your own life? If you do that, you will be extremely happy. That is what he says. And the sixth sloka, dharma dharmo sukham dukkham, manasani na te vibho, न करतासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा. सो दैट इज व्हाट ही सेज. ये जो धर्म अधर्म सुख दुख, ये जो भावनाएं अपने अंदर पैदा हो रही है, मैं कुछ कार्य करता हूं, मैं कुछ काम करता हूं, और जो अगर काम अच्छा है तो सोचा कि आज मैं धर्म का काम किया. आई हैव डन वेरी ऑस्पिशियस वर्क टुडे. आई हैव डन something which is auspicious, something which is going to give me sukha. And then sometimes I feel that I scolded that fellow, I did something wrong today, मैंने पाप कर्म किया और इसे मैं दुखी हो जा रहा हूं. तो बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी है ना, वो धर्म अधर्म और सुख दुख इस विषय में ही चली जाती है. नाउ व्हाट्स अष्टावक्र इज सेइंग, मानसानि नते विभो. Those ideas of what is auspicious, what is unauspicious, what is virtuous, what is sinful, and what is happiness and what is misery, they are all ideas in your mind only. They are your mental conceptions. Dharma, dharmo, sukham, dukkham. मैंने धर्म किया है, मैंने अधर्म किया है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सब मन की कल्पनाएं मात्र है. न ते विभो, यू आर विभू, यू आर ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस. तुम शुद्ध चैतन्य हो. न करतासी न भोक्तासी. यू आर नॉट द डूअर, यू आर नॉट द एंजॉयर. मुक्त एवासी सर्वदा. द मोमेंट यू बिकम साक्षी, यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट द डूअर. सुख दुख की भावना या पाप पुण्य की भावना तभी आएगी जब तुम खुद को कर्ता समझोगे कि ये मैंने किया है, ये मेरा कर्म है. व्हेन यू स्टार्ट ओनिंग योर एक्शंस, तुम कर्ता हो जाते हो. व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर एक्शंस, तुम भोक्ता हो जाते हो. जब तुम कर्ता हो जाते हो, तुम भोक्ता हो जाते हो, तो सुख दुख तुम्हारे जीवन में आता है, धर्म अधर्म तुम्हारे जीवन में आता है. If you withdraw yourself, and if you understand, there are only waves in the mind, there are only chitta vrittis. धर्म अधर्म की जो भावनाएं हैं, वो केवल तुम्हारी चित्त वृत्तियां हैं. सुख दुख की जो भावनाएं हैं,
वो केवल चित्तवृत्ति है, और इसीलिए तो सुख कभी टिकता नहीं, दुख कभी टिकता नहीं. If we, they are not only the stories which Ashtavakra is telling. Really, how many times we have become miserable in life? Misery has come and gone. अभी अगर हम देखेंगे कि बचपन में भी बहुत दुख हो जाता था. जब मेरा खिलौना टूटा हुआ था, इतना रोया हुआ था, बाप रे बाप, ऐसा लगा था सब कुछ गया. Now, when I look at it, I laugh at it. I say, "Oh, I was a child, and therefore I was so sorry that my toy was broken," as if something great has happened. Now, what has happened? I have grown, my consciousness has grown, and I look at the same incident as a Sakshi now. I am witnessing what happened in the childhood, and therefore I laugh at it. Again, when I was young, I was so much attached to this Sukha Dukkha and Dharma Adharma. And I was so sorry about it. Remember when you were in college, and when you were very young, and young person naturally gets attracted to the opposite sex, and a beautiful girl smiles and you are in the heaven. हाँ, कॉलेज में जब आज जाते हैं, आप बहुत यंग हो और बहुत सुंदर लड़की आपको अगर स्माइल करती है, आपको ऐसा लगता है स्वर्ग मिल गया मुझे, आ हा हा हा, क्या बात है. Now, when you have become old and when you look at it, you laugh at yourself. You say, "Are kitna mein, huh? What was there?" She smiled, and I was so much thrown into the heaven. And next day, when she did not look at me at all, I was so depressed. All that sukha dukkha. Now, if I look back and look at my own life, so many things which were miserable to me, now I laugh at them because I have become a Sakshi now. Now, what Ashtavakra is saying is, why can't you do it here and now? अभी जो घटित हो रहा है, अभी जो देख रहा हो, अभी जो अनुभव कर रहे हो, वो भी तो आप इसी तरह से देख सकते हो. So instantaneously, can you start looking at yourself as a witness? If this change of attitude, if it is possible for you, life will be full of roses. Life will be full of calm, quietude, silence, total freedom. Total freedoms come to a man who becomes Sakshi. And that is what Ashtavakra is telling. So the first sadhana, most important sadhana, which Ashtavakra has told in all these verses, is Sakshi Bhava. And that is something which is to be practiced and seen for ourselves. If we are able to do it, even little bit of it, life will change. Whenever you are able to do it, life will change. Try it. Try it for yourself. Whenever you are angry, look at yourself. Say to yourself that this fellow is getting angry. Look at him. He's boiling. He's fretting. He's fuming. Now, if that thought comes to you, anger will reduce to half. Guaranteed. And when you are excited, also become Sakshi. अरे कितना देखो नाच रहा है, उसको उसको लगता है क्या हो गया, वो तो he's at the crest. Look at him as a Sakshi. Sakshi Bhav is the sadhana which has been told by Ashtavakra. So let us stop here on this beautiful note on the 6th, and we shall be continuing with that. I shall chant the Shanti mantra and stop here. But if there is time, and if you want to make any observations, if you want any number of questions, I am here, and we can have discussion as long as you want, depending upon how long Deepak Bhai allows us. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya
मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत.